हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। इसमें स्क्रीन विजिबल टू ऑल? ठीक है। तो आप सभी भक्तों का दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में। तो आज जो हमारा सेशन लेने वाले हैं वो है हिज ग्रेस माधव मुरारी प्रभु जी। तो हम आपको प्रभु जी का थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देते हैं। दो हम इतने एलिजिबल नहीं हैं कि हम इतने सीनियर डिवोटीज का इंट्रोडक्शन दे सके, बट फॉर माय प्योरिफिकेशन हम प्रभु जी का ग्लोरिफिकेशन करेंगे आप सभी के साथ। So first we'll welcome Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So His Grace Madhava Murari Prabhuji is a dear disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. And Prabhuji का जो legal name है it's Mikhail Mishan and he is from Russia. And Prabhuji has got his higher degree education in law from Satov Law Academy in 2005. Prabhuji has joined SCON in 2006 and helped the humanity and world at large by spreading the message of Bhagavad Gita all over the world. Prabhuji is a part of many preaching activities all over the world and conducts many educational seminars and programs. Also, has his base in Vologda, North Russia, and Prabhuji does translation services of Indian ancient scriptures there. At present, Prabhuji is in Yugoslavia, Russia. Also, Prabhuji is preaching Krishna consciousness in various countries. So, we'll once again welcome Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम का बहुत बहुत स्वागत है। Uh, I'll be so, translating uh, what you say. Yes. you will be translating. Okay, Hare Krishna, dear friends, dear devotees, nice to see you this wonderful evening. हरे कृष्णा। तो आप सभी प्यारे भक्तों का, प्यारे मित्रों का आज की शाम में बहुत बहुत स्वागत है। And you could see this video where the importance of book distribution was shown by practical experience of East of Kailash devotees. जैसा कि आपने अभी इस वीडियो में देखा कि भगवत गीता और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के इतने इम्पोर्टेंस को दिखाया है बाय ईस्ट ऑफ कैलाश स्कॉन्स एंड द डियर डिवोटीज ऑफ द टेम्पल। But at the same time, we should remember that Srila Prabhupada was telling many times that not only book distribution is important, but to read the same books is really important also. इसी तरीके से प्रभुपाद जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन को ही नहीं बल्कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते बुक्स का वितरण मतलब उसको पढ़ने का भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। So today we are going to discuss why it is so important. तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये इतना ज्यादा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। And our today's talk will be based on this book written by Gauranga Darshan Prabhu, which is called The Art of Studying and Teaching Scriptures. तो आज का जो हमारा ये सेशन होगा, ये जो बातचीत हम करेंगे, ये हम एक बुक के थ्रू करेंगे जो कि गौरांग दर्शन दास प्रभु जी ने लिखी है। And the same way, like this video about book distribution is quite mesmerizing, the same way the explanation why it is important to read scriptures is also quite attractive. जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि वो कितना मेस्मराइजिंग, कितना ज्यादा देखने में अच्छा लग रहा था, वैसे ही इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा आपको सुनने में इसको अच्छा लगेगा। And many important subject matters are mentioned in this book, and you can order this book on Amazon, and you can see the link, and I will
send the link in our chat also by the end of our session that everyone could order the copy of this wonderful book. ये बुक बहुत ज्यादा अच्छी है, आप इसे अमेजोन से खरीद सकते हैं। हम इसको चैट बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे सो दैट आप इसका इतनी ज्यादा अच्छी बुक का पढ़ सके इस बुक को खरीद के। So we have this abbreviation scripture. Scripture, you can see it is abbreviation. And each and every letter of this abbreviation has particular meaning. ये स्क्रिप्चर का पूरे एक एब्रीविएशन दे रखा है और हर एक जो लेटर है इसका अपना अपना एक अर्थ है। So we have two meetings. We meet today, this evening, and we meet tomorrow evening, and we are going to discuss this abbreviation, why it is so important to read Srila Prabhupada's books. तो जैसे कि हम आज मिले हैं वैसे ही हम कल शाम को भी मिलेंगे और इस एब्रीविएशंस को हम पढ़ेंगे और इससे हमें ये पता चलेगा कि श्रील प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना इतना जरूरी क्यों है। So this abbreviation starts from word satisfaction, as satisfaction. तो ये जो एब्रीविएशन है ये पहला शब्द इसमें एस से स्टार्ट होता है जिसका मतलब है सेटिस्फैक्शन। And Srimad Bhagavatam tells us that each and every living entity can get satisfaction by reading these books. Even self-realized souls, even liberated souls, those who achieved spiritual perfection, they also can experience satisfaction just by reading these books. तो श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन किया गया है कि जितनी भी एंटिटीज है, जितने भी आत्माएं हैं जो स्पिरिचुअल पाथ में हैं और नहीं भी हैं, वो सब इस किताबों को पढ़ के एक सेटिस्फैक्शन ले सकते हैं। So it is famous Atmarama Shloka. It is famous Atmarama Shloka. ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध आत्मारामा श्लोका है। Atmarama, it is not only those who are satisfied on the level of their purified spiritual existence, but it is also those who are satisfied on different levels of existence, because this word Atma has many meanings. Atma means body, Atma means mind, Atma means soul, and so on. आत्मारामा का मतलब यही नहीं कि आप सिर्फ अपने भक्ति के लेवल पर ही सेटिस्फाइड रहें, आप अपने नॉर्मल पाथ में भी जो सेटिस्फाई रह सकते हैं, जिसमें इसका आत्मारा का मतलब आता है, उसमें शरीर आता है और मटेरियल बॉन्डेज, ये सब चीजें आती हैं। But anyway, in this particular shloka, when we say Atmarama, we are speaking about person who understands that he is a spiritual soul, eternal spiritual soul, and a servant of Krishna. तो यहाँ पे आत्मारामा का मतलब है कोई स्पिरिचुअल आत्मा हो जो भक्ति में हो या कृष्ण का जो सर्वेंट हो, कृष्ण का कोई दास हो। So in this famous Atmarama shloka it is said that Lord, it is the last sentence in the translation of this shloka, Lord possesses transcendental qualities and therefore he can attract everyone, including liberated souls. तो जैसे कि इस श्लोक के आखिरी लाइन में आप पढ़ सकते हैं कि भगवान ट्रांसेंडेंटल जो क्वालिटीज हैं, जो सारी क्वालिटीज होती हैं उसको पोजेस करते हैं, जिससे सारे लोग उस चीज से अट्रैक्ट हो, जिससे वो खींचे चले हैं और अपनी जो आत्मा है, स्पेशली लिबरेटेड सोल्स। It means that this process of reading Srila Prabhupada's books, it is not some kind of temporary process which is meant just for our purification, and then when we achieved some perfection we don't need these books. No, these books are attractive for any spiritual practitioner, including those who achieved perfection in their spiritual life. ये श्रील प्रभुपाद की जितनी किताबें ये सिर्फ हमारे लिए, बट ये उनके लिए भी हैं जिन्होंने एक लेवल पा लिया है स्पिरिचुअल परफेक्शन में, ये उनके लिए भी बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Because these books are about Krishna and Krishna is all attractive. क्योंकि ये किताबें कृष्ण के बारे में हैं और कृष्ण सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। It is natural to think that these books are meant for those people to whom we are trying to distribute these books on the streets. Means these books are meant for people who don't know anything about Krishna. It is natural to think like this.
ये किताबें सिर्फ उनके लिए ही नहीं जो बांट रहे हैं किताबों को, ये उनके लिए भी हैं जो कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। But at the same time, we know that even Srila Prabhupada, he was reading his own books about Krishna. और हमें ये भी जानना जरूरी है कि शीला प्रभुपाद अपनी ही किताबें खुद भी पढ़ा करते थे और कृष्ण के बारे में जाना करते थे। Which is not typical for ordinary writer. When someone has this profession of a writer, he writes books, but he doesn't read his own books, he just writes the books. But these books, Srila Prabhupada's books, it is not just Srila Prabhupada's books. This knowledge belongs to Sri Guru Parampara, and basically it is about all attractive Krishna. That's why Srila Prabhupada, he was reading his own books with great pleasure. शीला प्रभुपाद अपनी किताबें खुद भी पढ़ा करते थे, और ये कोई साधारण बात नहीं है क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं है कि जो किताब लिखता है वो अपनी किताब खुद पढ़े। बट शीला प्रभुपाद अपनी किताब खुद पढ़ा करते थे क्योंकि ये गुरु परंपरा से चला आ रहा है और इसमें कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है। So we can feel this satisfaction by reading these books. We can feel ourselves happy, satisfied, peaceful, and so on, just by reading. तो हम इससे सुख पा सकते हैं, इससे सेटिस्फाई हो सकते हैं जस्ट बाय रीडिंग, सिर्फ शीला प्रभुपाद की किताबें पढ़ के। And the result of this reading is described in Bhagavad Gita, verse 10.9, Machita Madgata Prana, Bodhayantah Parasparam, Kathayantas Chamam Nityam Tushyanti Charamanticha, which means that the thoughts of my pure devotees dwell in me, their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction. Again, we're speaking about satisfaction. They derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. तो ये भगवत गीता के 10.9 श्लोका में बताया गया है, और इसमें इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है कि यहाँ बताते हैं कि जो मेरे सच्चे भक्त हैं वो अपना मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं और वो अपना जीवन पूरा मेरी सर्विस पे समर्पण कर देते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, इस चीज से वो सेटिस्फाई होते हैं, एंड वो मेरे बारे में ही डिस्कशंस करते हैं, कृष्णा के बारे में ही डिस्कशंस करते हैं। Kathayantas Chamam Nityam means they always enlighten one another about Krishna. Means this transcendental knowledge is unlimited. It is not that I became PhD and now I know everything. Regarding material knowledge, that's okay. Person, he can get some particular amount of knowledge and he doesn't have to be enlightened because he knows his particular field of material knowledge. But if we are speaking about Krishna, spiritual practitioners, bhakti yogis, they can enlighten each other always. Nityam, kathayantas chamam nityam. तो ये सिर्फ एक मटेरियल नॉलेज के लिए नहीं, ये जो जितने भक्ति योगा वगैरह भक्ति योग होते हैं, जितने भी जो स्पिरिचुअल पाथ में बहुत आगे होते हैं, कि कृष्ण को समझने के लिए इन्हें पढ़ते हैं, और कृष्ण की जो बातें हैं वो अनलिमिटेड हैं, वो लिमिटेड भी नहीं है, वो अनंत तक है। Kathayantas, Katha, Krishna Katha means talks about Krishna, about all attractive Krishna. कथ्यांता का मतलब होता है कृष्ण के बारे में बात करना, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कृष्ण के बारे में। So here in one of the purports to Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada writes that one of the most important qualities of the Lord is his inclination to his devotees, for which he is called Bhaktavatsala. The devotees are always very much inclined to render service unto the lotus feet of the Lord, and the Lord is also very much inclined to accept loving service from his devotees. तो ये श्रीमद् भागवतम में ही बता रखा है कि एक सबसे ज्यादा जरूरी क्वालिटी भगवान की ये होती है हिज इंक्लिनेशन टू हिज डिवोटीज, जो जिसे हम भक्ति वत्सला बोलते हैं, और जो डिवोटीज होते हैं वो कृष्ण के जो चरण कमल हैं उन पे सर्विस करते हैं, कृष्ण की सर्विस करते हैं, और जिससे वो भगवान के प्रेम को पा सके। That's all you translated? जी। Oh, really? Okay. So you see, we do our steps
toward Krishna and he does his own steps toward us. Can you please repeat, Prabhuji? We're trying to become closer to Krishna. We do our steps. And Krishna, he does his own steps. He also becomes closer to us. तो हम कृष्ण के पास जाना चाहते हैं, इसलिए हम एक एक स्टेप बढ़ के हम कृष्ण के पास जाते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण भी हमारे पास आना चाहते हैं और इसलिए वो भी एक एक स्टेप, एक एक कदम आगे बढ़ के हमारे पास आते हैं। We read these books, we are trying to understand these books, and Krishna gives intelligence to us that we could understand it better. तो हम ये बुक्स पढ़ते हैं, बट जो कृष्ण है वो हमें इंटेलिजेंस देते हैं, वो हमें इस चीज को समझने की शक्ति देते हैं कि हम किताबों को कैसे समझें। And when he gives intelligence and when we understand more, we feel more satisfaction by mercy of Krishna. तो जैसे जैसे कृष्ण हमें इसका समझने का इंटेलिजेंस देते हैं, वैसे ही वैसे हम इन चीजों को और ज्यादा समझते हैं और इसी प्रकार से हमें कृष्ण की मर्सी, कृष्ण की कृपा मिलती। We read these books. When we read these books, it is our relationships with Krishna, because these instructions that we can find in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, these instructions are not different from Krishna. तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस जो श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में दिए गए हैं, ये कृष्ण से अलग नहीं है, ये कृष्ण ही। We try to understand, Krishna gives intelligence, and we feel that Krishna is Bhaktavatsala, he takes care of us, that he gave us more intelligence to understand him better. And we feel satisfaction because he is acting as Bhaktavatsala. Krishna is acting like Bhaktavatsala. तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो कृष्ण है वो एक भक्त वत्सला है और वो हमें इंटेलिजेंस देते हैं, दिमाग देते हैं कि हम जो किताबें हैं उनको समझ सके और कृष्ण को अच्छे से जान सके। And we are going to the next letter, to the letter C, which means conviction. तो हम अगले शब्द पर चलते हैं जो है सी, यह है कन्विक्शन। A conviction, we have to get conviction for our spiritual life in order to go on, you know. तो हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा कन्विक्शन देना पड़ेगा, जिससे हम अपनी भक्ति को और बढ़ा सके और आगे बढ़ सके। And here in this purport to Srimad Bhagavatam, it is written that in order to get this conviction, in order to believe in the personality of Godhead Shri Krishna, one has to read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. तो श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि अगर कृष्ण को समझना है, किसी को कृष्ण के बारे में जानना है, तो फिर उसे श्रीमद् भागवतम को पढ़ना पड़ेगा। And he should avoid so-called professional reciter. He has to approach someone who belongs to Shri Guru Parampara. तो उसको जो भी प्रोफेशनल राइटर्स हैं, जो बहुत ज्यादा Professional reciter, professional speaker. प्रोफेशनल जो स्पीकर हैं, जो प्रोफेशनल स्पीकर है, उसको छोड़ के जो गुरु परंपरा से जो हमारे पास चले आ रहे हैं, उनको सुनना चाहिए कृष्ण को समझने के लिए। So he should just accept this explanation of who Krishna is and what devotional service is and so on. He should accept this understanding according to the teachings of Sri Guru Parampara, not just by speculating that maybe it is so and maybe that is like this. The efforts of our own mind, our own versions, are not relevant because we have just to accept the version which is given by Sri Guru Parampara. तो हमें कृष्ण को एक्सेप्ट करना है, हमें कृष्ण की सर्विस को, जो हम सर्विस करते हैं कृष्ण के लिए, हमें उसे एक्सेप्ट करना है और हमें गुरु परंपरा को एक्सेप्ट करना है। हमें ये नहीं सोचना कि हम कभी कंफ्यूजन में आ जाते कि हम आत्मा है, ऐसे है, लेकिन हमें उसको समझना। So here Srila Prabhupada explains that Bhakti Yoga begins if a person has the firm conviction that simply discharging devotional service to the Lord in full transcendental love can elevate him to the highest perfectional stage of stage of life. तो जो भक्ति योगा है, ये एक पर्सन का, इफ अ पर्सन हैज अ कंफर्म कन्विक्शन, मतलब अगर कोई है जो सिंपली, जो बहुत सिंपल है, भक्ति से ज्यादा सर्विसेज में है, लॉर्ड का ट्रांसेंडेंटल लव है, तो वो एलिवेट होता है, वो बढ़ता है धीरे धीरे भक्ति की लाइफ में, अपनी लाइफ में
वो धीरे धीरे एक लेवल अप होता रहता है. So Shastra tells us that we are servants of Krishna. We are parts and parcels of Krishna. It तो is our शास्त्र it is our eternal position. तो शास्त्र हमें बताते हैं हम कृष्ण के दास हैं, और यही हमारा एकमात्र, हमारा जैसे बोलते हैं पोजीशन है. हमें कृष्ण के दास हैं और हमें उनकी सेवा करनी है. Mm. And Bhagavad Gita is exactly about that Krishna is asking Arjuna to perform particular devotional service to fight on Kurukshetra battlefield. कैन यू प्लीज प्रभु जी? And Bhagavad Gita is exactly about this, about devotional service, because in Bhagavad Gita, Krishna is asking Arjuna to perform particular devotional service, to fight on Kurukshetra battlefield. तो भगवत गीता जो है वो भी पूरा एक डिवोशनल सर्विस, जो एक भक्ति की सर्विस के लिए ही है कि हम कृष्ण को कैसे सर्व कर सके. और जैसे भगवत गीता में, महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को बोल रखा है कुरुक्षेत्र में कि वो युद्ध करे, वो भी एक सेवा का ही पार्ट. So we need to get such conviction from Shastra that if I serve Krishna, then I can consider my life to be successful because it is the essence of my life. तो ये हमें शास्त्रों में बताते हैं कि अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ज्यादा सुखी हो जाएगा, और यही इसका आधार. We are going to the next letter, R, which means regulation. तो हम अगले शब्द पे चलते हैं जो कि आज इसका अर्थ है रेगुलेशन. Our life should be regulated. Here it is written in famous verse from Bhagavad Gita that one who is regulated in his habits, eating, sleeping, recreation and work, he can mitigate all material pains by practicing the yoga system. तो श्रीमद् भगवत गीता में ये बताया गया है 6.17 श्लोका में, जो अपना खाने का, सोने का और रिक्रिएशन का जो भी पूरा प्रोसेस है, अगर उसे वो संभाल लेता है, हर एक भौतिक जो भी हम कष्ट है उसको करके, तो वो ये सब चीजें जो संभाल सकता है वो एक भक्ति योगा सिस्टम के थ्रू ही संभाल सकता है. So Shastra tells us to keep everything in balance because we can understand from our own practical experience that when we overeat or when we oversleep or when we work too much, it creates problems in our life. तो शास्त्र हमें बताते हैं कि हमें अपनी मटेरियल चीजों को, खाने को, सोने को, रिक्रिएशन को, काम को भी बैलेंस करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा सो जाते हैं या ज्यादा खाते हैं, ज्यादा काम करते हैं, तो फिर वो बहुत दिक्कत देता है हमें जीवन में. So when everything is in balance, then we're not so much disturbed by our mind, by our body, and we can be focused when we meditate on holy names of Krishna. तो अगर हमारा जीवन बैलेंस रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, तो फिर हम अपने भक्ति में और भगवान के नाम में बहुत ज्यादा अच्छे से मन लगा सकते हैं. So here in the purport to this verse, Srila Prabhupada explains that Krishna conscious person doesn't do anything which is not connected with Krishna's interest, and thus his work is always regulated, is untainted by sense gratification. And because he is regulated in his work, speech, sleep, wakefulness, and all other bodily activities, there is no material misery for him. तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद इस वर्ष में ये बताते हैं, भक्त है, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो भक्त है, जो भक्ति में है, वो जो भी काम करता है वो कृष्ण से जुड़कर ही करता है, ऐसा ही काम करता है जो कृष्ण की इच्छा से हो, और वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए नहीं करता है. बिकॉज वो अपने जितने भी हमारा सोने का, खाने का, काम करने का जो भी काम है उसे बैलेंस करके रखता है, और इसलिए उसको कोई भी भौतिक जगत में कोई भी दिक्कत नहीं होती है शरीर. So from this purport we can understand that regulated lifestyle, it doesn't mean it is not just about keeping in balance our sleep, our eating, sleeping, eating, and other things, but it is also about what is the purpose of my life. Means I do some activities, and why I'm doing these activities, on which my desires, these activities are based. I should understand it clearly, and if it is
connected with Krishna's interests, then I can consider my life to be regulated. रेगुलेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम अपने इन चीजों को बैलेंस कर ले, सोने को, खाने को और काम करने को, बट रेगुलेशन का मतलब ये है कि हम ये समझे कि हमारे जीवन का असली अर्थ क्या है और कृष्ण का क्या अर्थ। Because otherwise, we know many people in this material world on this planet, people who are too much absorbed in different materialistic activities, that they do these activities mainly for themselves, and usually we can see that they are very much disturbed by their own minds and bodies and people around them. They have many disturbances. तो जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि आसपास बहुत सारे लोग ये सिर्फ अपने सुख के लिए करते हैं, इसलिए वो दिमागी तौर से और शारीरिक तौर से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, और वो भी और उनके आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। So we are going to the next letter, which is letter from which word inspiration starts. Inspiration. तो हम अगले शब्द की ओर चलते हैं जिसमें लेटर है उसका आई, जिसका अर्थ है इंस्पिरेशन। Inspiration or enthusiasm, which is almost the same. इंस्पिरेशन और एंथुजियाज्म दोनों ही एक तरीके से सेम ही शब्द है। So Wikipedia tells us that this word enthusiasm, it comes from Greek language, from the root theos, and this root theos means God, means Supreme Lord. So this word theology, likely you have heard this word theology, it also comes from the same root theos. Theology means knowledge about God, and enthusiasm comes from the same Greek root theos. तो विकिपीडिया के थ्रू अगर हम देखें तो जो एंथुजियाज्म का वर्ड है वो एक ग्रीक थियोस के थ्रू आया है, जिसका अर्थ है गॉड, भगवान, और ये थियोलॉजी है ग्रीक की, जिसमें हमें बताया गया है कि इसका अर्थ जो है वो भगवान है, गॉड है। So here it is written that originally this word enthusiasm was used to refer to a person possessed by God, means inspired by God, possessed by God, or someone who exhibited intense piety. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एंथुजियाज्म का असली अर्थ ये है कि जो भगवान से जो प्रेरित हुआ है उस इंसान के लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। And of course, now we can see that this word enthusiasm is meant also when we're speaking about people who are inspired for materialistic life. तो आजकल हम देख भी रहे हैं कि एंथुजियाज्म का जो शब्द है ये आजकल उनके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है जो मटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत ज्यादा अटैच्ड है और उनसे इंस्पायर। So it is quite important to understand that this word enthusiasm comes from this root theos, means God, because actually we get this inspiration, this enthusiasm, ultimately we get it from Krishna. Krishna gives these sacred scriptures, we read sacred scriptures and we become inspired. तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये शब्द अब ग्रीक थियोस से आया है, बट हमें ये पता है कि ये कृष्ण है जो हमें इतना ज्यादा स्क्रिप्चर्स देते हैं, इतना ज्यादा ग्रंथ देते हैं जिससे हम उनको पढ़ सकें। Or we chant holy names of Krishna that are not different from Krishna, and we also become inspired by mercy of Krishna. तो हम जैसे भगवान का नाम जाप करते हैं तो वो भगवान से अलग नहीं है, वो भगवान ही है, और हम भगवान से इस चीज में प्रेरित होते हैं। Or we take prasadam, which is not different from Krishna, and we become inspired by taking prasadam. Everyone has this practical experience. तो जैसे हम प्रसादम भी पाते हैं तो वो भी कृष्ण है एक तरीके से, और इसलिए हम उससे इंस्पायर होते हैं, इसलिए हम उससे प्रेरित होते हैं। Or we go to temple and we see Archa Vigraha, we see the deity of Krishna, which is not different from Krishna, and we again become inspired by mercy of Krishna. तो जैसे हम मंदिर जाते हैं तो भी हम भगवान के अष्ट विग्रह को देखते हैं, तो वो भी विग्रह ही नहीं, वो कृष्णा ही है स्वयं, और हम
उनकी मर्सी से, उनकी कृपा से हम इंस्पायर होते हैं। So, here in this verse, Krishnadas Kaviraj Goswami, who is the author of Sri Chaitanya Charitamrita, he explains that he was able to write Sri Chaitanya Charitamrita by mercy of Supreme Lord, who inspired him to do it. तो जैसे कि हम जानते हैं, जो चैतन्य चरितामृत के जो राइटर हैं वो कृष्ण की मर्जी से, कृष्ण की कृपा से ही ये सब लिख पाए हैं, और किसी कारण से। I'm the lowest of men, I have no knowledge, but the Lord has mercifully bestowed upon me the inspiration to write transcendental literature about devotional service, therefore I offer my obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो यहाँ पर वो बताते हैं कि मैं सबसे ज्यादा लोएस्ट ऑफ मैन हूँ, एंड मेरे अंदर ज्यादा दिमाग नहीं है, बट कृष्ण की कृपा से मैं, मेरे अंदर इंस्पिरेशन आई जिससे मैं ये सब चीजें लिटरेचर लिख सका डिवोशनल सर्विस भक्ति योग पे। एंड मैं कृष्ण के कमल चरणों में प्रणाम करता हूँ, चैतन्य महाप्रभु के कमल चरणों में प्रणाम करता हूँ। So, what do we have here? Ah? Ah? Okay. So you see, we should also understand that the source of our inspiration is Krishna, and for that we should put endeavors to chant holy names attentively. तो इसलिए हम ये जानते हैं कि जो सोर्स है पावर का, जो इस शक्ति का जो सोर्स है वो कृष्णा ही है, इसलिए हमें अपना जप बहुत अटेंटिवली, बहुत सावधानी से करना चाहिए। And to read Srila Prabhupada's books attentively also. The attention is needed everywhere. इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद की जो किताबें हैं हमें उसको भी सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। So here, what is written here? Srimad Bhagavatam 1, 2, 3 purport. Very simple to memorize. 1, 2, 3. Yes, I understood what is the meaning of this quote. It is written here that Bhagavata Vedanta Sutra, it means Srimad Bhagavatam. This Srimad Bhagavatam is given specifically, the last two lines, specifically for all those sincere souls who want to get out of material existence. तो यहाँ पे भगवत वेदांत सूत्र का मतलब श्रीमद् भागवतम ही है, जिसमें ये बताया गया है कि ये उनके लिए, उन आत्माओं के लिए है जिनको इस मटीरियल, इस भौतिक जगत से बाहर आना है। Means inspiration, it is not just some emotions that we feel ourselves nicely. Inspiration or enthusiasm, it is enthusiasm to achieve particular goal, to get out from this material world and to go to spiritual abode, to serve Krishna. तो यहाँ पे एंथुजियाज्म का मतलब यही नहीं है कि हम अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए करें, बट उसका एक यही अर्थ है कि हम इस मटेरियल एग्जिस्टेंस, इस भौतिक जगत से बाहर जा सके और कृष्ण को पा सके। So first Shastra tells us that don't expect anything nice, don't expect real happiness here in material world. Try to go to spiritual abode. And then the same Shastra tells us how to achieve this parama artha, means this highest goal, how to achieve spiritual abode. तो जो हमें शास्त्र है वो ये नहीं बताते कि हमें भौतिक जगत में कैसे आगे बढ़ना है, हमें शास्त्र ये बताते हैं कि हमें आध्यात्मिक भक्ति में हमें कैसे आगे बढ़ना है और कृष्ण को प्राप्त करना है। Means Shastra inspires us to achieve this highest goal, and then Shastra gives direction how to achieve this goal. तो पहले शास्त्र हमें ये बताते हैं कि हमें क्या अचीव करना है और हमें क्या पाना है, किस गोल को पाना है, फिर शास्त्र हमें ये बताते हैं कि उसे कैसे पाना है। So here in Srimad Bhagavatam verse 1343, Srila Prabhupada writes in the purport that if men in this age of Kali want to see the real light of life, they must take to these two books only, means Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, two books only, and their aim of life will be fulfilled. तो श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस युग में, इस कलयुग में जो भी पुरुष है वो अगर अपने जीवन को
जानना चाहता है, वो असलियत जानना चाहता है, तो उसे ये दो किताबें श्रीमद् भागवतम एंड श्रीमद् भगवत गीता लेनी चाहिए, जिससे वो अपना जो जीवन है उसको फुलफिल कर सके, जो भी उसका एम है जीवन का, जो भी उसकी इच्छाएं हैं उसको पूरा कर सके। Srila Prabhupada writes about 80 or 90 volumes of books, but the main books are Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and Chaitanya Charitamrita, and other books. They explain the content of these basic books, these foundational books, explain these foundational books from different angles. तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे वॉल्यूम्स लिखे हैं, बट तीन मेन किताबें जैसे हमारा श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत और कुछ ऐसी बुक्स हैं जो हमें बताती हैं, जो हमें इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करती हैं और पॉइंट आउट करती हैं। And we are going to the next letter, P, which means purification. तो अब हम अपने अगले शब्द की तरफ चलते हैं जो है पी, जिसका अर्थ है प्योरिफिकेशन। Purification, we want to purify our existence, we want to purify our mind, and we want to purify our understanding of life. तो प्योरिफिकेशन का मतलब ये है कि हमें अपने मन को, अपने आत्मा को, अपने लाइफ को, अपने जीवन को प्योरीफाई करना है, साफ करना। So here, Srila Prabhupada writes that perfect purification of the mind is made possible when one is fixed in the conviction of being the eternal servitor of the Lord. So you can see purification and conviction are interrelated things. तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि असली सफाई, परफेक्ट प्यूरिफिकेशन जो मन का है, जो वो तभी हो पाएगा जब हम अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, जब हम ये मान लेंगे कि हम भगवान के दास। So here we have few more quotes. Well, maybe too many quotes for our short presentation. Okay, let's read this one. Srimad Bhagavatam 2:37. Those who drink through oral reception, fully filled with the nectarian message of Lord Krishna, the beloved of the devotees, purify the polluted aim of life known as material enjoyment, and thus go back to Godhead, to the lotus feet of the personality of Godhead. तो श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो इन सब चीजों को अच्छे से पी लेता है और फुलफिल विद द नेक्टर, और जो कृष्ण जो भगवान है, उनके जो मैसेज है, जो भी उन्होंने हमें संदेश दिया है, उसको पूरा करता है, और उसको फिर डिवोटीज का प्यार, प्योरीफाई होता है उसका मन, और उसको जो मटेरियल जो हमें एंजॉयमेंट है वो उससे प्योरीफाई होता है, उससे साफ होता है, और फिर वो भगवान के धाम वापस जा पाता है, भगवान के चरण कमलों में। So there is external cleanliness and there is internal cleanliness. तो यहाँ पे दो प्रकार की सफाई हो रही है, एक हमारे अंदर की और एक हमारे बाहर की। And we maintain external cleanliness by taking bath every day. तो हम अपने आप की बाहर की सफाई लेते हैं, हम स्नान करके इत्यादि। And we keep internal cleanliness by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and by reading Srila Prabhupada's books. तो हम अपने अंदर की, अपने आत्मा की सफाई कैसे रखते हैं? भगवान का नाम जाप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और श्रीला प्रभुपाद की किताबें को उनका वितरण करके, उनको पढ़ के। And the result is that our understanding of aim of life becomes purified. और उसका रिजल्ट, उसका जो अंतिम जो उसका आता है वो ये आता है कि हम अपने जीवन को समझ पाते हैं। Also, it is important to associate with devotees in order to keep this understanding of aim of life, to keep it purified. और हमें भक्तों का संग भी करना चाहिए, जिससे हम जो हमारा जो मोटिव है, जो हमारा जो एम है जीवन को लेके, हम उसको अच्छे से समझ सके। Okay, so it is about what? It is okay. Purport.
And by constant hearing of the messages of the Bhagavad Gita and later of Srimad Bhagavatam, one is assured herein by Srila Shukadeva Goswami that he will reach the personality of Godhead and render him transcendental loving service in the spiritual planet of the name Goloka Vrindavana, which resembles a huge lotus flower. तो श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि हम सुन के ही बार बार सुन के जो हमें मैसेज दिया गया है भगवान कृष्ण के द्वारा भागवतम में और भगवत गीता में, तो यहाँ पे श्रीला सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं दैट कि वो भगवान के धाम वापस जा सकते हैं उनकी सेवा में, एंड जिसे हम गोलोक बोलते हैं, गोलोक वृंदावन, जिसका वर्णन जो बिल्कुल एक बड़े से कमल की तरह दिखता है. So you understand that purification is really needed in order to achieve spiritual abode, because only those are accepted to this spiritual planet, to this spiritual abode, whose service attitude is unalloyed. तो हमें इसलिए अपने अंदर की और बाहर की सफाई रखना बहुत जरूरी है. जो हमें अंदर की जो सफाई है, चैंटिंग और बुक रीडिंग, ये सफाई जरूरी है जिससे हम भगवान के धाम वापस जा सकें. Okay. So, and the last letter for today, and tomorrow we will continue, we will finish this presentation. The last letter for today is termination. Termination means we want to terminate our material existence. We want to finish with samsara. We want to tell bye-bye to samsara. तो हमारा जो आखिरी शब्द है वो है टी, टर्मिनेशन, जिसमें हमें अपने संसार को इसको समाप्त करना है, इसको खत्म करना है. We want to tell bye-bye to material life, you know. So, and also this letter T, termination, is not only about to terminate our materialistic life in this material world, but it is also about to terminate our anxieties in our minds. तो टर्मिनेशन जो खत्म करना है, इसका सिर्फ यही अर्थ नहीं है, इसका यही मोटिव नहीं है कि हम अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को करें, बट जो हमारे अंदर जो हमारे एंजाइटी है अंदर, उसको भी करें. So here in this verse, Srimad Bhagavatam 177, it is said that simply by listening Vedic literature, the fire of lamentation, illusion, and fearfulness is extinguished. तो श्रीमद् भागवतम में ये लिखा गया है कि सिर्फ वैदिक लिटरेचर जो हमारे शास्त्र है उनको सुनने से ही हम विल फील द लविंग, जो हम भगवान की जो सेवा है हम उसको समझ पाएंगे. Okay. So it is because again we come back to to some of our previous points. It was told that Krishna is Bhaktavatsala, he takes care of his devotees. Just by understanding that he takes care of us, we don't lament anymore. तो हम अपने कुछ पिछले पॉइंट्स को वापस एक बार दोहराते हैं कि जो कृष्ण है वो भक्त वत्सल हैं और वो अपने भक्तों की बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं और वो लिमिट नहीं करते हैं सब चीजों को. We don't lament anymore about ourselves, but we continue to lament about other conditioned living entities, and it is called compassion. If we are lamenting and if we still were worried about their future of conditioned living entities in this world. तो हम अपने फ्यूचर के बारे में ना करके अगर हम दूसरों के उसके जीवन के बारे में अगर सोचते हैं, उनके बारे में हम कंसीडर करते हैं, उनको लेमेंट करते हैं. So Prahlada Maharaj, he tells in this verse, he is praying to Lord Nrisimhadev and he is saying to Lord Nrisimhadev, I'm not at all afraid of material existence,
For wherever I stay, I am fully absorbed in thoughts of your glories and activities. My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies, countries. I am simply concerned with love for them. तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को यही बताते हैं कि मैं इस भौतिक जगत से मैं परेशान नहीं हूँ, और मैं इसमें बस इसी बात पे मैं ज्यादा मेरा फोकस जाता है। मेरा कंसर्न यही है उन बद्ध जीव के लिए जो इतनी इस भौतिक जगत की खुशी और परिवार को और जितने भी हमारी सोसाइटीज हैं इस देश को अ, खुश रखने के लिए, मतलब जो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा खुशी रहते हैं। So you see, our ISKCON society is not just about to become free from stress, free from anxieties. It is also about to make other living entities free from these problems of material life. तो हमारा सिर्फ यही मोटिव नहीं है कि हम अपने आप को एंजाइटी से, डिप्रेशन से और इन सब चीजों से दूर रखें, बट यही भी है कि हम और भी जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग हैं, उनको भी इन सब चीजों से हम दूर रख सकें। Because if we would take care of ourselves only, it means we could be considered as spiritual egoists, those who takes care of their own spiritual well-being only. तो अगर हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचेंगे तो फिर हम वही कहलाएंगे, एग्विस्ट कहलाएंगे, जो सिर्फ अपने बारे में ही, अपनी ही स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सोचते हैं। But Srila Prabhupada, he has shown on his own example that we have to preach, and ISKCON is designed as preaching organization, preaching movement. So we are trying to spread this knowledge, we are trying to spread this Srila Prabhupada's mercy as much as possible. तो हम जैसे शिला प्रभुपाद हैं, वो प्रीचिंग भी करते थे, वो वितरण भी करते थे इस चीज का, भक्ति का। और स्कॉन जो है वो इसीलिए ही बनाया गया है जिससे हम प्रचार कर सके इस चीज का और हम लोगों को समझा सके सब चीज। And of course, we are not so much exalted like Prahlada Maharaj, but anyway, we can take part in this preaching mission just because we were asked to do it by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is asking us to do it, and Spiritual Master is asking us to take part in these preaching activities. That's why we taking part. तो हम प्रहलाद महाराज की तरह तो नहीं हो सकते, लेकिन हम प्रचार में प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हमें शिला प्रभुपाद ने बोला है, हमें हमारे गुरु ने बोला है, इसलिए हमें ये प्रचार करना चाहिए। It is the reason why these nice people, nice devotees from east of Kailash temple that you could see on this video, that's why they are going on the streets and they are preaching, they are distributing books, because they were asked by their authorities to do it, and they happily accepted this instruction. जैसा कि अभी आपने देखा था वीडियो में कि ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल के जितने भी डिवोटीज हैं वो बाहर जाके प्रचार कर रहे हैं किताबों का, क्योंकि उन्हें उनके गुरु और अथॉरिटीज ने बोला है, इसलिए वो बाहर जाके इन किताबों का प्रचार कर रहे हैं। And they accepted this instruction with happiness. और वो इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं बड़ी खुशी खुशी। Kushi kushi. Okay. So in just two more slides and we finish for today, and tomorrow we continue. So here in this class, Srila Prabhupada, he explains this class which was given in Kolkata in 1976. He explains that Prahlada Maharaj is lamenting, but he is lamenting not for himself. He is quite all right because he have taken shelter of Krishna's lotus feet. But he is lamenting because for these rascals, means materialistic people, for these rascals who are making, for these rascals who are making big plans to be happy in this material world. तो ये शिला प्रभुपाद ने एक लेक्चर दिया था 1976 में कोलकाता में, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि प्रहलाद महाराज सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, प्रहलाद महाराज इज नॉट लेमेंटिंग फॉर हिमसेल्फ,
क्योंकि वो तो भगवान के श्री चरण कमलों में तो वो शेल्टर ले ही चुके हैं वहां पर। बट वो उन लोगों के लिए चिंतित हैं जो इतने इस भौतिक जगत में अपने बड़े बड़े प्लान्स बना रहे हैं खुश रहने के लिए। It is quite dangerous to create big plans for this material world. ये बहुत ज्यादा खतरनाक है कि हम अपने बड़े बड़े हम विचार बना लें इस भौतिक जगत के लिए। Because the law of karma is such that if you are not able to accomplish of all your big plan during this lifetime, then you are destined to take birth again in order to finish with this plan. तो लॉ ऑफ कर्मा, क्योंकि अगर आप इस जीवन में अगर अपने जितने भी आपने प्लान्स बनाए वो पूरे नहीं कर पाए, तो फिर लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग आपको दोबारा जीवन लेना पड़ेगा अपने प्लान्स को पूरा करने के लिए। So what serious devotees they do, they consider this material world just to be this particular, you know, on a railway station or in airport, they have particular area where people just sitting and waiting for their trains or airplanes. So the same way Vaishnava is considering this material world to be a place where I'm just waiting. Well, I'm serving, I'm doing different activities, but basically I'm waiting when this material life will be finished, and ideally after this material life, my spiritual existence in spiritual abode will be started. तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो एक तरीके से भौतिक जगत में खुशी रहने की खुशी नहीं ढूंढते हैं, वो वेट करते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं स्टेशन पे एयरपोर्ट्स पे जैसे वेटिंग एरिया होता है, वहां पे लोग अपनी ट्रेन प्लेन्स के लिए वेट करते हैं। उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सब तो करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन उसके अलावा वो यहाँ पे वेट करते हैं कि इस भौतिक जगत को हट हट के यहाँ से जब ये हटेगा तो फिर वो भगवान के धाम कैसे जा सके। At least this analogy with this area where people are sitting and waiting for airplanes or trains, this analogy is good because just by meditating on this analogy, we can understand that really everything is temporary in this life, and any circumstance of my life which I have now is temporary, and after some time, everything will be changed anyway. तो जो ये ट्रेन वेटिंग आपको एरिया का ट्रेन का और प्लेन का ऐसे एनालॉजी दिया था, तो ये बहुत अच्छा एनालॉजी है। ये बताता है कि हमारे जीवन में जो भी है वो सब कुछ टेम्पररी है, आज है कल नहीं रहेगा। तो वो ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। So, one of the qualification of Vaishnava, Vaishnava takes, oh, sorry, OMG, what's going on? Hare Krishna. Okay, Vaishnava took shelter in lotus feet of Krishna. जो वैष्णव है वो भगवान के चरण कमलों में अपना शेल्टर लेते हैं। He himself is not worried about anything. वो किसी और के बारे में चिंतित नहीं रहते, किसी और चीज के बारे में। But one of the qualifications of Vaishnava is that he takes trouble to deliver sinful persons from hellish conditions of material existence. Can you read, Prabhuji? But one of the qualities of Vaishnava is that Vaishnava is taking trouble, taking anxiety, and so on, to deliver, it is written here on the screen, to deliver all sinful persons from the hellish conditions of material existence. तो जो वैष्णव होते हैं उनकी एक क्वालिटी होती है कि वो जितने भी एंजाइटीज वगैरह होते हैं उसे लेते हैं, जिससे जितने भी जो फॉलन सोल, जितने बद जीव हैं, उनकी वो मदद कर सके उस चीज में। That's why we use this Vaishnava Pranama mantra Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sinubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha. इसलिए हम ये जो वैष्णव जो प्रणाम मंत्र है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस प्रकार है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। And Patitanam Pavanebhyo means that they are
full of compassion for the fallen souls. और पतितनाम पावनेभ्यो को मतलब है कि वो जो बद्ध जीव है, फुल ऑफ कंपैशन, वो उनको सुधारने में लगे। The chief concern of a Vaishnava is to deliver the fallen souls. जो वैष्णव है उनका कंसर्न यही रहता है कि वो कैसे जो बद्ध जीव है उनको समझा सके जी। It is the reason why Srila Prabhupada he was translating and writing his books. Every night he was sitting and writing these books. तो यही कारण है कि श्रीला प्रभुपाद जो है वो इतनी रात को भी, पूरी रात भर वो ये सब किताबें लिखा करते थे। He took this trouble to write these books. He was reducing his sleep, and he was writing these books not just to earn money, but to save fallen souls first of all. तो वो ये सब जो किताबें लिखते थे वो ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए करते थे, वो अपनी नींद भी इस चीज के लिए हटा देते थे जिससे वो फॉलन हो, जितने बद्ध जीव हैं उनको सुधार सके। It is one of the qualities of Vaishnava that he wants to terminate material existence of ideally of everyone. और ये एक वैष्णव की क्वालिटी होती है, शुद्ध भक्ति क्वालिटी होती है कि वो इस भौतिक जगत के एग्जिस्टेंस को सबके अंदर से हटा सके। So, and we can help Srila Prabhupada in this work just by reading his books, just by imbibing what he wrote in his books in order to become closer to Krishna. तो हम श्रील प्रभुपाद की मदद इस चीज में कैसे कर सकते हैं? उनकी किताबें पढ़ के, उनको समझ के और उन सब चीजों को फॉलो करके, जिससे हम कृष्ण के और करीब जा सके। Hare Krishna. हरे कृष्ण। And now where is the chat? And now I'm going to send you this link for this book written by it is here in chat. If you wish, you can order this book, which is called The Art of Studying and Teaching Scriptures. The Art of Studying and Teaching Scriptures. You can order this book if you wish. तो इस बुक का चैट में हमने लिंक डाल दिया है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ स्टडिंग एंड टीचिंग स्क्रिप्चर्स। तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। And I'm speaking about this book not just in order to advertise this book, or it is not that I was asked to advertise, but I just can say that this book is really nice. Really nice. प्रभु जी इसलिए नहीं कह रहे कि उन्हें बोला गया है कि वो सिर्फ इस बुक का एडवर्टाइजमेंट करे, बट वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बुक बहुत ज्यादा अच्छी है और आप लोग इसे पढ़े। Okay. So now we are going to take your questions if you have the questions. As far as I can see, we have some questions in the chat, right? जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन आया है। What about a question? So should I write one question? Should I read one question? Yes, please read. So Abhishek Prabhuji is asking, Hare Krishna Prabhuji, Danvat Pranam. My question is how to make notes from Srila Prabhupada books and how to apply it in real life. Okay. Well, very simple. You take notes, you take pen and write your notes, and then you read your notes. Very simple process. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि आप बुक लीजिए, रजिस्टर लीजिए और आप पेन से उसमें बनाइए और उसको पढ़िए। And we have to be in prayerful mood, means in mood that I'm praying to Bhagavad Gita or to Srimad Bhagavatam, that please help me to understand what is written here. तो हमें हमेशा प्रे करते रहना चाहिए श्रीमद् भगवद भागवतम से और कृष्ण से कि मेरे को ये समझ आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। So it is very important to have particular mood. That's why we have to be humble. So इसलिए हमें एक अच्छे मूड में रहना चाहिए और हमें हम्बल रहना चाहिए। Okay, how to apply it? How to apply it in real life? Well, I can say that, you see, what I can recommend. It is nice to have a counselor.
It is nice to have a counselor who knows your circumstances, who knows your, who knows you, who knows your nature, and he will be able or she will be able to explain you nicely how to apply. And you also can approach such people with particular questions or concerns or some situations you have in your life, so you can discuss these things with them. Anuvat, translation. Yeah, can you repeat, Prabhuji? OMG, I already forgot what I told. I'm saying that it is nice to have a counselor. हाँ, प्रभु जी बता रहे हैं कि एक काउंसलर हो या कोई मेंटर हो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके साथ रहे तो. Because you are asking how to apply this knowledge in real life. In order to understand how to one can apply this knowledge in real life when it is clear for him what are his circumstances and what are his qualities. So there are some details that can be discussed with counselor mainly. So जो आपके काउंसलर है वो ही आपको बता पाएंगे आपके सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन देख के कि आप कैसे इसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं इन सब चीजों को. Yeah, such answer. Okay, let's see. What is the next question? प्रभु जी, अंजना माता जी is asking, do all books have their own importance or are they all the same? That's interesting, but I cannot see this question here. Anyway, well, as I told, the main books are Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Charitamrita. Other books are also important, otherwise Srila Prabhupada would not spend his precious time to write these books. But anyway, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita are foundational books. Yeah. तो जो चैतन्य चरितामृत और जो भागवतम है, श्रीमद् भगवत गीता है, ये फाउंडेशनल बुक्स हैं. Okay. The next question. प्रभु जी, गंगा कुमारी माता जी is asking, Hare Krishna Prabhu ji, Danat Pranam. Please accept my humble obeisances. Prabhu ji, my mind is not able to connect with Srila Prabhupada books. That Prabhupada ji in his books, I think just it as a material book, not able to realize that Krishna and his words are indifferent. Krishna and his words are non-different, right? Or indifferent? Yes, Prabhu ji. Non-different. Well, don't think like this. Don't think like this, because these books, it is message of Sri Guru Parampara. It is transcendental message. And it is presented to us in form of so-called material book, material paper, and so on, because our senses are material and our body is material. So how we can interact with something which is spiritual, how we can do it? That's why this knowledge is presented to us in this form, which looks like something material item, but the message is transcendental. तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो है एक मटेरियल चीजें हैं, क्योंकि ये गुरु परंपरा से चलती आ रही हैं. जैसे हमारी सेंसेस भी जो है वो मटेरियल ही है एक तरीके से, और बॉडी भी मटेरियल है. तो एक यही प्रकार है कि हम इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को पढ़ सकते हैं, और ये कोई मटेरियल चीज नहीं है, ये एक ट्रांसेंडेंटल ज्ञान है आपके लिए, एक भक्ति ज्ञान है. The more you will be absorbed in holy names, in these books, in Vaishnava association, the more you will be able to realize that Krishna and his words are non-different from each other. It is the question of practice. जितना आप ज्यादा कृष्ण के नाम को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि कृष्ण और उनकी किताबें जो है वो डिफरेंट नहीं है, वो सेम ही है. Okay, the next question. Prabhuji, next question is, Mataji is asking, Hare Krishna Prabhuji, how can an introvert person preach? How can an introvert person preach? Well, he can preach to other persons who are introvert. Why not? So प्रभु जी वहाँ बता रहे हैं कि इंट्रोवर्ट पर्सन जो है वो दूसरे इंट्रोवर्ट पर्सन को प्रीच कर सकते हैं.
if the question is just like about what to be if I'm too much shy that I'm afraid to approach people and other things. Well, if we understand that this message is important and if we are really inspired to share this knowledge, then by Srila Prabhupada's mercy, Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy, people become fearless. Even those people who originally were shy, they become more self-confident, just because they understand that this knowledge is important, and they are not forcing themselves to share this knowledge, but they are really inspired because this knowledge already changed their lives. तो अगर आपको लगता है कि ये जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है और बहुत ज्यादा अच्छा है, तो श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की मर्जी के थ्रू आप इसे अपने आप ही दूसरों को समझा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप शाय हैं या आपको डर लग रहा है, लेकिन उनकी मर्जी के थ्रू आप डायरेक्ट ही खुद से आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप और इंडिविजुअल्स को ये सब चीजें बता सकते हैं। So basically, it is the question of practical experience, how our life has changed or didn't change because of this spiritual knowledge. And if it is really changed, then we just look around and we see people who didn't get this mercy yet, and we want to share this spiritual taste, or we want to share this great fortune with others. It works तो like this. ये सब प्रैक्टिकली हो पाएगा, ये आपको करके देखना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर अगर आपके साथ ये चेंज होता है कि आपके अंदर किताबें पढ़ के कॉन्फिडेंस आता है, तो फिर आप और भी जितने भी जीव हैं, जितने भी डिवोटीज हैं जिनके अंदर नहीं है कॉन्फिडेंस, जो इंट्रोवर्टी हैं, जो प्रीचिंग नहीं कर पा रहे, आप उनको बता सकते हैं, उनकी मदद कर So, सकते हैं। so everyone has his target audience. If someone is introvert or too much shy or very sensitive person, maybe it is nice to become good instrument in Krishna's hands because someone also has to preach to the same category of people who are also too much sensitive or shy or introvert and so on. So usually those who have particular nature, for them it is easier to preach to the people who has the same nature or similar nature. तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत शाय हैं या सेंसिटिव हैं, तो आप प्रयास कीजिए कि आप उन्हीं लोगों को प्रचार करें जो सेम उसमें है, जैसे जो सेंसिटिव हैं या शाय हैं, जो थोड़ा घबराते हैं, क्योंकि उनको प्रीच करना बहुत ज्यादा आसान होगा। But of course, it is not that our qualification is just limited to preach only to those who are just like us. Just by practical experience, we can see what is our target audience, to whom we can deliver message and to whom usually we fail to deliver message. We can see just by trying ourselves in these activities and seeing what works and what doesn't work. तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आप उन्हीं के साथ करेंगे जिनका बिहेवियर आपके जैसा ही है, बट आप प्रैक्टिकली ये कोशिश कर सकते हैं कि आपकी एक टारगेट ऑडियंस कैसी है, और आप जिनको प्रीच करने जा रहे हैं आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। Okay, the next question. Yes, Prabhuji. So Prabhuji, next question is Hare Krishna Prabhuji. In professional job, sometimes we need to change our attitude to control situations for subordinates or other persons. That time, how we adopt Gita? Oh, means it is about managing people, right? Yes, Prabhuji. Well, it is Kshatriya's duty. Kshatriyas, they manage. ये एक क्षत्रिय की ड्यूटी है और वो इस चीजों को मैनेज करते हैं। The same way like Arjuna was asked by Krishna to fight on Kurukshetra because it is Kshatriya's duty. ये उसी प्रकार से है जैसे अर्जुन को कृष्ण जी ने बोला था कि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े क्योंकि वो एक क्षत्रिय थे।
So this situation is easier than situation of Arjuna because at least you don't have to kill anyone, you just have to manage. There is no question of killing. तो यहाँ पे कोई किसी को मारने का कोई ऐसा तो है नहीं अर्जुन की तरह। यहाँ पे बस ये है कि आपको लोगों को समझाना पड़ेगा। Mm. So we have to get some knowledge of conception of leadership in Krishna consciousness. तो हमें थोड़ा इसका ज्ञान लेना पड़ेगा लीडरशिप का कृष्ण कॉन्शियसनेस में, भक्ति में कैसे रख सकते हैं। And what is the name of this book written by Bhakti Tirtha Swami? Leadership in okay, I will check the name of this book. Anyway, I'm searching, and meanwhile I will be explaining what does it mean. Srila Prabhupada was telling many times that leader in Krishna consciousness means leader servant. Leader servant. तो शिला प्रभुपाद बहुत बार ऐसे बताते हैं कि लीडरशिप का असली अर्थ ये होता है लीडर सर्वेंट, मतलब जो लीडर है उनका दास। It is important to understand because you see, usually in material world, when someone become big boss, he has the tendency to exploit the subordinates. क्योंकि जैसे अगर हम इस भौतिक जगत में देखते हैं, अगर कोई बड़ा कोई उच्च पद पे होता है जो बॉस बन जाता है, तो फिर उनके अंदर ये पावर होती है कि वो बाकी जो सब ऑर्डिनेट्स हैं जो उनसे थोड़े से एक पोजीशन नीचे, उन्हें कंट्रोल कर सके या उनको एक्सप्लॉइट कर सके। But in ISKCON we are trying to how to say, to imbibe or to promote or to follow the another way, the another understanding that leader first of all is not who is exploiting, but leader is one who took this burden of love. He has to take care of many people now. तो इसलिए स्कॉन जो है वो यहाँ पे हमें अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि लीडर का मतलब ये नहीं होता जो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो जितने भी डिवोटीज हैं उनको एक्सप्लॉइट करे, लेकिन वो ये बताता है कि हम प्रेम से उनके साथ कैसे रह सकते हैं और बात कर सकते हैं। Means in material life, leader or basically those people who are trying to take leadership positions, they are trying to take these positions just to enjoy themselves and to facilitate their own lives by engaging subordinates in some activities, to basically by exploiting subordinates. तो इसलिए इस भौतिक जगत में लीडर्स लोग इसलिए बनना चाहते हैं जिससे वो अपने इस उच्च पद को और अपनी इस लाइफ को जी सके, और जो उनके जो नीचे एक लेवल नीचे जो सब ऑर्डिनेट्स है उन्हें एक्सप्लॉइट कर सके। But if we are speaking about spiritual leadership, it means that we are doing something and it is our service to those who are our subordinates. For example, someone is junior devotee, so my duty is to share some spiritual knowledge or to give some practical help and so on, many other things. तो भक्ति में यही होता है कि अगर हमें दिखता है कि कोई हमसे जूनियर डिवोटी है तो हम उन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज दे सके या कुछ अच्छा हम भक्ति के थ्रू हम उन्हें ज्ञान दे सके और उनकी मदद कर सके। So it is about ISKCON. By the way, the name of this book written by Bhakti Tirtha Swami is, in English it will be Leadership for an Age of Higher Consciousness. तो Yes. एक बुक है जो लीडरशिप ऑफ एज ऑफ हायर कॉन्शियसनेस है, ये इंग्लिश में है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। Yeah, Bhakti Tirtha Swami, this book has 2 volumes, Leadership for an Age of Higher Consciousness. And this book looks like it is available on Amazon. Looks like. तो अभी No, देखिए it is not available on Amazon, but it is available in Bhaktivedanta database, and I can send soft copies to Vaibhav Prabhu, and he can share if it is needed. If it is needed, because these books are not available on Indian Amazon now. तो ये बुक्स इंडियन अमेजोन में अवेलेबल नहीं है, तो प्रभु जी ये बुक्स का सॉफ्ट कॉपी वैभव प्रभु जी को भेज देंगे एंड वो हमारे साथ शेयर कर देंगे। Yeah, Leadership for an Age of Higher Consciousness.
Uh, so in these books, Bhakti Tirtha Swami, he discusses the conception of leadership and spiritual organization. And but anyway, Prabhuji, likely you are asking about managing people, just not in ISKCON, outside ISKCON, in some particular company. But anyway, if to read these two books, this book which contains 2 volumes, anyway, some approaches, some conceptions can be used in managing people in business or whatever, according to Vedic understanding. तो जैसे कि आप भी पूछ रहे हैं, प्रश्न कौन से रिलेटेड नहीं है, बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है, तो आप ये बुक को पढ़ सकते हैं। इसमें 2 वॉल्यूम है और इसकी कुछ चीजों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Mhm. Okay, the next question. Hare Krishna Prabhuji, Dhanvatram. Prabhuji, please list the name of Srila Prabhupada books which we should read in starting bhakti period. Which we should read in starting bhakti period. Devotees from east of Kailash, they compiled such a list which contains basically all the books. Usually we start from these small books. And well, you can start from such book like, for example, Perfect Questions, Perfect Answers, and other books like this. Of course, again, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita are foundational books, but it is not easy. Usually it is not easy to start from these books. Usually people, they start from something simple. But anyway, if someone is able to start from Bhagavad Gita, it is nice, it is good, it is also possible. Usually it is recommended to start from small books like Perfect Questions, Perfect Answers, and what books do we else have? And Second Chance, and Raja Vidya or Raja Yoga, this book, something about yoga, and Path to Krishna, these books are good. We can start from these books. वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता स्टार्टिंग में नहीं बोली जाती, बट बोला यह जाता है कि पहले आप स्मॉल बुक्स को पढ़ें, उसके बाद भगवत गीता और भागवतम पे आए। जैसे स्मॉल बुक्स में परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर्स, योगा के ऊपर बुक्स, और ऐसे ही बहुत सारी शिला प्रभुपाद के थ्रू बुक्स लिखी गई हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। बट अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो नो इशू। The next question. So Prabhuji, as time constraints, so we'll take other questions tomorrow in the session. Okay. Then you please copy these questions from chat. Okay. Copy these questions, and tomorrow we will be having time to discuss those questions. So you please copy the whole chat, because we have 1 or 2 questions in the very beginning. For example, Nandini Singh is asking Prabhuji what is the meaning of convictions, and then Ritika is answering faith. Okay, means she already has got the answer. Anyway, yeah, you please copy the whole chat, and we will discuss those questions that we didn't answer today. We will discuss it tomorrow evening. Yes, Prabhuji, I've copied the chat. Yes, sir. Very nice. We'll Okay. all thank Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra for giving his such precious time to us and explaining everything, almost everything about preaching, and books are the basis, किताब ही आधार है, and we are so thankful to Prabhuji. So we'll chant Hare Krishna Mahamantra loudly for Prabhuji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Hare Ram, Ram Rama Ram. Rama, Hare Hare. Hare Krishna Prabhuji. बहुत बहुत धन्यवाद. We are so thankful to you. Hare Krishna. Thank you very much for your attention, and good night. Good night. Good night. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्तों को यही बताना चाहेंगे कि कल भी इसी समय प्रभु जी के साथ हमारा सेम सेशन होगा इसी टॉपिक पे। सो हमने जो क्वेश्चंस थे जो बचे थे वो कॉपी कर लिए हैं। तो कल के सेशंस में या तो आप सभी सेम क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा जिन भक्तों के प्रश्न बचे हैं,
तो हरे कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज के सेशन में आए, और हम यही चाहेंगे कि आप आने वाले सेशंस में भी आते रहें और कल के सेशन में भी हमारे साथ बने रहें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को प्रेरणा दे कि वो भी हमारे साथ जुड़े। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।